Okay. So Ashima, why you want to join ISB? Okay. I want to join ISB as my long-term goal is to make a career in operations and supply chain management. And I think ISB is a great choice for me given its rankings and academic quality and the quality of the cohort that I will get. One of the major reasons for me joining ISB is that it is a research-backed, data-backed institute. And in this program, I will be able to I will learn about various subjects, and I will also be able to specialize in operations and supply chain management in year two. Can you introduce yourself? My name is Ashima, and I'm based out of Ludhiana. After completing my BA LLB, I joined an educational consultancy firm, which is Bell's Educational Consultants, as legal and administrative coordinator. During this role, I noticed that all the application files were processed in a similar manner, irrespective of the background of the profile. And I suggested an early assessment based on risk, due to which the files can be classified. And this led to me working close to the operations team in my organization and eventually to the transition of What operations was role. the turnover of this company? So it is not publicly available. Approx. So it is approximately around 5 crores. Hmm. So what is the role of a legal person joining in legal and admin coordinator? Why you did not go for management, so for the field of law, because you have done DLLB? Why you did not pursue that? So I joined as a legal and administrative coordinator after completing my BLLB. In this role, I was responsible for making sure that all the applications and the files compliant with the visa regulations and the regulations of different countries. They are That very basic. There is a check sheet. All these consultants they follow 10 pointer check sheet, passport, 10th marks, originals, blah 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 blah, graduation marks, address, yeah, this proof of the police, etc. etc. So what was your role as a legal background person coming and joining an immigration setup? I don't think this job could have been done by somebody who is just a graduate, and they would be doing. So, in this role, Hmm. although there are some profiles that require following the basic checklist, but some cases require more documentation and more compliance. For example, in the case where the You student feel has, your BLLB background was justified for this kind of a role? so it did help me to How much understand. time you spent here? So, I spent 3 months in this Three role, months. Okay. and then I transitioned to the operations role. In the same company. Yes, sir. What was the operations role? So, in the operations role, If it was, Ashima, to be very frank, if it was this whole experience was with a law advising company or anyone who is dealing with law, big lawyer, etc., all this thing makes sense, the background with which you were entering over there. But this kind of role, what you did, what over in operations, okay, you were telling what was your role. So, in the operations role, I'm responsible for ensuring that the files move smoothly from the time of Where did enrollment. you use your legal expertise in that operations role also? That somebody else who was a simple graduate would be also doing same thing, ensuring that file moves smoothly, that mails are sent with all attachments to the university, then university approves, isn't it? Yes, sir, but I think I was able to transfer my skills from a legal background to this role. For example, during my law school, I learned how to look at a situation with different perspectives as I took part in various moot court competitions where I was required to deal with the case from either of the In side. our view, you are a vested lawyer. You're a very good. You did a BA LLB from a very good college, Mohali Law Institute. So, what is your take on it? So I think that I learned various skills during my law school that I have been able to apply in my current work experience, and I will be able to apply those skills in my future work as well. For So law and management are totally different fields. So why did you not? Why you went for law? Let us try to understand this way. Why you went for law after your plus two? You had subjects of commerce. Why you did not go for management? Now you want to come for management. So we need to understand why you went for law. So I went for law because I am someone who deeply enjoys इसी का ध्यान रखना, understanding. because your hair should never come, never So in your I'll eyes, tie my hair in the during eyes, the interview. because they will not
point it out, but it will look shabby to them, and it reflects poorly on our, this is okay, carry on. So after plus two, what happened? Why you went for law? So I'm someone who deeply enjoys understanding how organizations are run and how decisions are made in the organizations. And also, from my childhood, I have been someone who takes the side of the truth, and I feel deeply about justice. So that is why I felt that I wanted to opt for law. Sure, that was And the reason. yes, sir. Then continue with that. Now do LLM. Why ISB? This. So that's very good. You want to be on the right side of justice. You want to be law to do its job, and the guilty should get punished and the innocent should get free. That's very good for a lawyer. So again, why not pursuing LLM? Why you are thinking about So during ISB? my operations role, I found that I enjoy problem solving and I'm able to contribute much better in this particular field. So I want to make sure that. Tell us what is the reality. Don't tell us. These are very nice answers. Somebody has told you that you should give this answer. Tell us the reality. Why you are not pursuing now law, LLM, or practice, or that path. Why you want to come to that? Be very truthful. So the reason why I want to move in the management field is because I genuinely enjoy understanding about So earlier you organizations. used to enjoy justice system, being right side of the on the right side of the justice system, fight for innocents and get the criminals prosecuted. Now you have change of interest to management. Tomorrow after this, again you will have a change. It is expected. Your mind change seems to be changing very quickly. What will be your next change? What you So will I think? still enjoy taking the side of justice, and I still enjoy making sure that the society contributing to the society. I have done various NGO work, and I've worked with an NGO called IMS'26, which is based in Punjab, and I will continue to work with different organizations. What are similarities between law and management as per what you have gauged so far? So, in law as well as in management, both fields have problem-solving aspects to it. Mhm. In law, as well as management, the people responsible identify the issue and identify the core problems, and then find a solution for this same. The difference between both comes when the lawyers deal with the issue after the situation has taken place, whereas in management role, most of the decisions take place at the time of the working of the organization. Welcome to the feedback later on. Okay? First, I'll do the full interview. Then I'll tell you what can be a little better answer. मुझे suspect हो रहे है कि the kind of questioning I'm doing, the way I have read the brain of ISB over the years, and the kind of people who will be interviewing you, and the kind of background you bring, I have strong suspicion, means strong intuition. These kind of questions can come. So how to give them in a better way, I'll tell you later on. So different law terminologies with respect to marketing and purchase. Can you tell? No, not I aware. can't. Say management interest, legal. I'll tell you this also how to ace this up. Okay, which acts deal with labor laws? So the labor code, Hmm. which recently came Tell us into. 4 5 laws which deal with that. So the Labor and. Labor Security Code 2020, Hmm. which recently came into the Hmm. place, it deals with the gig workers such as Hmm. Zomato or Hmm. Swiggy workers. Hmm. So uh, that is one change that has happened in 2020. 2020. Okay, fine, good. And so earlier Industrial Dispute Act 1947 was Hmm. in place, which is Hmm. now replaced by the Labor Code Okay, good, 2020. good, good. Any one or two more? So Minimum Wages Act, Contract Labor Acts, Trade Unions Act, Payment of Wages Act, etc. So which Companies Acts are you aware? What all is covered under Companies Act? So the Companies Act 2013, Hmm. uh, it talks about the registration of companies Hmm. and the memorandum of association, articles of association, and Who takes care of registration in India so of the the company? registrar of companies Okay. take place. What is DIN number?
So it is the number assigned to the company at the time of the registration. नहीं आता, this is a mistake. Never do it. If we don't know something, honesty demands we should say no, sir. I am not able to recall. I'm not read about it. Director identification number, DIN number, director's ID number. So different. What is the difference between MOU and MOA? Uh, so MOU is Memorandum of Understanding, and MOA is पहली चीज तो डेफिनेशन पे लड़खड़ा रहे हैं, और फिर डेफिनेशन के आगे का कुछ पता है कि नहीं पता? मतलब मुझे फर्क क्या है याद दोनों नहीं में? आ रहा, क्यों मैंने पूछ रहा हूँ? मैंने तो स्पेसिफिकली पूछ लिया, डिफरेंस बिटवीन MOU एंड MOA नहीं पता? मतलब मैंने पढ़ा हुआ है बट MOU is non-legally binding. Memorandum of understanding. We have, like we signed MOU with a Russian company, we signed MOU with a Brazilian company, with ArcelorMittal. Memorandum of understanding, two-page document, not legally binding, sets the broad outlines, intentions, goals, meeting of minds, and what are we trying to achieve through that MOU. Like they will give us offer every month by this date for around 40,000 ton per month. They have allocated that one. So we need to close that negotiation say by 12th of the month, and then it will be shipped out within next 40 days. So we need to do LCs like this mutual trust fund and income quality control. If quality issue comes, how will we raise? Major broad understanding. No legal binding. There's no jurisdiction attached to it. There's no legality attached to it. So MOA, Memorandum of Agreement, is more detailed, often legally binding document specifying specific roles, responsibilities, and terms and conditions of the agreement, even commercial terms. इनको टर्म्स इंटरनेशनल ये पूछ सकता है, वैसे चांसेस कम है. मैंने उसमें आज सुबह भी जो मैसेज भेजा, वॉइस मैसेज, उसमें यही बताया कि इसमें IIFT में, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंको टर्म्स होती हैं, जैसे FI, सॉरी, there are terms like CIF, cost and freight included, insurance, cost of insurance and freight included. So there are further bifurcations on this. Like if somebody is shipping the material, he is bringing it to my port, and the insurance is also included in it. I don't need to cover it separately. So if it gets lost inside, it's not my loss. After the material crosses the rail of the ship, then my responsibility, my accountability starts. So CIF is that. Then there are CFR, only cost for freight included, not insurance. तो ऐसे कई सारी होती हैं इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. तो इनको थोड़ा सा नजर मारने का पड़ेगा. तो इस MOA इसी में हम लिखे होते थे कि जैसे लिखा होता था CIF, LO, लाइनर आउट. इसमें कई और टर्म्स हैं, वो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. So what are memorandum of agreement is more detailed, often legally binding document. Jurisdictions are mentioned, and which courts of laws it will be referred to if any dispute comes, specifying clear goals, responsibility, terms, everything very clearly, crystally defined in it. That those are the kinds of a MOA. MOU is general, macro level, not legally binding. What if we select you and we get you in ISB, and we tell you in 2 days of your joining you have to give a PPT on knowledge sharing with your batchmates? What all you will cover in that PPT? So in this PPT, uh, so I would focus on my legal background, since I come from a different background, a non-traditional background. I would like to focus on my different viewpoint, as I'm sure that I'll have different viewpoints. I'll bring a different viewpoint of the cohort, and I will also be able to learn from different people who come from diverse backgrounds. से बच्चा फिर ये पता क्या हो रहा है, सब कुछ समझो प्लीज. ट्राई टू, दिस इज ग्लोबल ज्ञान, गोली ज्ञान, नॉट स्पेसिफिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मीन्स वी आर गोइंग टू ए कॉलेज विच इज एट पार. और मेरे मेरे अगर बेटे का आज IIM अहमदाबाद और ISB में सिलेक्शन हो जाए, somehow I will prefer ISB, इंडियाज नंबर 1 प्रोग्राम. और ISB का मैंने थोड़े दिन पहले रैंकिंग भी शेयर किया, वर्ल्ड वाइड भी 12 तक आ गया FT रेटिंग में, 12 या 34 या कुछ ऐसे. इंडिया का तो टॉप है ही. तो once we are going for that big college, we need to leave this
anything, any one good, you know, strong chokka chakka with where it hits where they are wanting you to hit the point what they want you to say. If it gets near that also, it does our job for selection. You need one such instance in the interview, one or two in the interview. बट दिस, और अगर ऐसा माइनस इंस्टेंस आ गया ग्लोबल ज्ञान गोली ज्ञान वाला, मुश्किल हो जाएगा, देन वहीं पे माइनस हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी. गेटिंग माई पॉइंट. सो व्हेन वी आर सेइंग लीगल बैकग्राउंड, माय लीगल बैकग्राउंड, आई विल टेल अबाउट माय लीगल, क्या करना है हमारी लीगल बैकग्राउंड को. आई विल टेल. मैंने पहले क्वेश्चन मैंने फ्रेम करते हुए इस तरह से किया कि आई गिव यू सम हिंट्स, you did not pick them. This is what we need to be smart enough. To every student who is watching this, we need to be very smart. Even if देखिए मैंने आपको हिंट दिया यहाँ पे, MOA ऑब्लिक MOU का डिफरेंस क्या है. ठीक है, कंपनी का MOA होगा. फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज आई विल शेयर. द लीगल, माई लीगल बैकग्राउंड को क्या लेना देना. हाउ हाउ लीगल legal things are important for business, and how to take care that we uh, first of all in my presentation I'll make them aware that what is the legal framework related to companies act, labor acts, etc. Whatever business relationship with legal can be there, I'll try to cover everything. Now this was a, for you, this kind of a question was a opportunity to hit 4 or 6. What we did, we scored dot. In fact, LBW appeal minus. Global ज्ञान, talk about my legal background, I come from this legal. क्या लेना देना बच्चा. Getting my point. We are talking. You are going to talk to a class of 120 people. Some of them can be doctors. Some of them can be ex, 5 years terms in Air Force, Army. Some of them can be 2 to 3 years of McKinsey, Boston Consulting, blah blah blah, BTech, सप्लाई चेन ऑपरेशन जिसकी बात कर रहे हो उसमें काम किए हुए लोग, बीटेक्स फ्रॉम IITs एटसेट्रा. इस क्लास को आपने बोलना है तो आप जनरल अपना ज्ञान थोड़ा बोलोगे. We will tell them, sir, I think you will agree that law and being on the right side of the law is very important for any business to survive. So I'll try to cover in my presentation all the gambits of business and their transaction with the law, intersection with the law, whether it is related to HR में 3 4 टक 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 बोल देने. ये मेरे इंट्यूशन आ रही है कि ये आपको शिलोंग में या कहीं पे और भी जहाँ क्वेश्चन आएगा, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चौके चक्के वहां लग जाएंगे सारे. हो सकता है भगवान करे ISP में लग जाए, नहीं लगे तो वहां लग जाएंगे और आप बोलोगे पट पट पट. वो भी 80% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है. अभी तक किसी ने पूछा नहीं किसी इंटरव्यू में गए लॉ के, वाई यू वांट टू कम फ्रॉम लॉ टू दिस, पूछा किसी ने. एक में पूछा है, बिट्सो में पूछा है ये. तो 80% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ये, बिकॉज बैकग्राउंड काफी गैप है. तो हमने उसको ओवरलैपिंग बतानी है. मैं आपको बताऊंगा भी व्हाट एरियाज यू नीड टू रीड सो दैट एंड प्रिपेयर योर नोट्स ऑन, सो दैट एकदम 4 6 लग बने. सो in my PPT, sir, I think we are a business school, and my class will be a diverse class. ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले, what will you bring to the, मैंने वो भी लिखा था क्वेश्चन, what will you bring to the class of ISP. ये इनका की ड्राइवर्स हैं ISP के. ओवर द इयर्स आई हैव सीन कि मतलब ये देखते हैं कि आप क्लास की कोहेरेंट लर्निंग जो है या ये क्लास लर्निंग में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, पीयर लर्निंग में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे. वो एक पैरामीटर उनका बड़ा तगड़ा है ये सिलेक्शन के लिए. ये ऐसे में भी था ये सेम क्वेश्चन ISB के. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना ISB का, आई हैव ओवर द इयर्स figured out this is one of the very big factors they consider while selecting you. So you must harp on this here or in IIM Shillong or whichever interview is pending, that I'll bring diversity of a law background to the class. यहीं पे नहीं छोड़ना. Where sir, I have seen that all businesses and almost all domains of businesses have very strong intersection with the legal framework of the country. मैंने यहाँ पूछा भी आपसे कि ये क्या नाम है, मार्केटिंग की कोई टर्मिनोलॉजी लॉ रिलेटेड बता दो, परचेज से रिलेटेड बता दो. अपन नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, बट क्लू ले सकते थे हम यहाँ से कि व्हाट आई एम सेइंग अबाउट. तो आई विल टेल यू वेयर टू एंड व्हाट ऑल यू नीड टू कवर.
इसमें भी मार्केटिंग में होती है इनको टर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट टर्म्स, डिस्प्यूट्स, कोर्ट्स टू बी रेफर्ड, jurisdiction, etc etc. So all those terms which are there in the marketing contract, कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें आ जाएगा सर, मार्केटिंग और परचेज दोनों। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो ये परचेज में आ जाएगा। अगर आप खुद एक सर्विस कंपनी और आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस वो सब आ जाएंगे। तो मार्केटिंग, परचेज, इस तरह से, ठीक है। क्वालिटी आ जाएगा तो क्वालिटी डिस्प्यूट्स। फिर आ गया इतना बड़ा लेबर का, मैं पूछ के हटा हूँ एचआर का, लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, लेबर कोड, फलाना ढिमका, सारे ने अच्छा बोला भी था। कंपनीज एक्ट, how companies act defines different types of companies, what are the different requirements for different companies, income tax act, IT act, gst act, gst act, compliance, non compliance issues, how to handle them, etc. So I'll tell, sir, every business has huge intersect, all domains of business in my view, sir, all domains of business have a huge intersection with the law framework. So I'll make a very detailed presentation of what are the laws applicable and what are the cares a CEO or companies future leaders should take, so that we are always on the right side of the law. ठीक है? Then cover now preferred field to work post ISB operations. बड़ा औखा है बच्चा जी, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में ना है नहीं है, आपका कोई लेना देना है नहीं है उसके साथ, बहुत दूर है आपसे। इंजीनियरिंग वाले बच्चे ज़्यादातर जाते हैं जिन्होंने 2-3 साल वर्क एक्स किया होता है शॉप फ्लोर पे या कहीं पे सप्लाई चेन में काम किया हो बड़े सेटअप में, वो लोग इन ऑपरेशन से। अदर सेकंड क्या है आपका, मार्केटिंग है। मार्केटिंग में है इंटरेस्ट के नहीं है, तो मार्केटिंग ही बनाओ। ये बहुत बड़ा मिसमैच है हमारे लॉ की बैकग्राउंड के साथ ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन में। मतलब मैंने बिना एसेज में ऑपरेशंस का लिखा फिर मेरे को हुआ है। दिखाया था ऐसे, फिर वही तो प्रॉब्लम है, सब कुछ आंदा है अपन को, बिग प्रॉब्लम। वैसे जैसे मैंने तो अपने जैसे वर्क के जरूरी नहीं है रिलेटेड ना वर्क में, तो इतनी जहाँ 5 साल की बैकग्राउंड है लॉ की, उसको देखना पड़ेगा ना। सिर्फ वर्क एक्स में तो फिर छोड़ क्यों रहे हैं, फिर करी जाओ उसको। दैट वाज नॉट a very good interesting thing and growth giving thing, that's why we are leaving that area and it's a very small setup। उसमें 4 चीजें आपसे, चलो मैं पूछ लेता, what you know non value adding activities you have eliminated in your system in last working। so in my workplace, we were the process was being followed such that all the application went through 2 levels of document verification. So I introduced this process where only the weak profiles would go through two This is very levels. basic, anyone could have done it, you did not need require Ashima, a lawyer, to do that. And it's a very, 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 very basic process you're talking about. What is Six Sigma? So Six Sigma, What is Kanban? so ये Kanban सब is कुछ है, the हाँ। मतलब मैंने ये पढ़ा हुआ है सिक्स सिग्मा मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड होता है एंड कानबान इज द विजुअल वीक है आपका सीक्वेंस। ये आंसर, सिर्फ लीन मैन्युफैक्चरिंग। सिक्स इज मच बिगर थिंग। व्हाट इज TQM? TQM नहीं पता, TPM भी नहीं पता होगा, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस, ये सब आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, क्वालिटी प्रोडक्शन। TQM इज रिलेटेड टू टोटल क्वालिटी में। तो ये जो आपने किया ये प्रोसेस बहुत 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 बेसिक है। एक इमिग्रेशन सेटअप में डॉक्यूमेंट देख करने फाइल लगाना और उसमें से एक एक वेरिफिकेशन का स्टेप से हटा देना, उसके बेसिस पे ऑपरेशन वगैरह ये जस्टिफाई नहीं होगा। तो क्या लिखा था उसमें कि आई वुड लाइक टू डू इट इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, वही है ना, बुद्धि अपने आप ही कर देता सबमिट, में से डिस्कस भी नहीं किया। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? you need to have at least 50% ज्ञान on these things to get into a operations and supply। उनकी स्पेशलाइजेशन ऐसी है तो नहीं है कुछ? है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन चार चार है, मार्केटिंग, छह स्पेशलाइजेशन है। मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप वो है छोड़ो, एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ। और ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन है और मतलब मुझे याद नहीं अभी बट मार्केटिंग, फाइनेंस,
अब आपने उसमें टिक भी यही किया है ऑपरेशन मतलब उसमें मतलब अभी नहीं वो सिलेक्ट करना होता, वो बाद में सेकेंड ईयर में? सेकंड ईयर में। यू टेल दैट अर्लियर व्हाइल आई वाज, अगर तो आप मार्केटिंग बोलना, हम्म, मार्केटिंग बोलना माय फील्ड ऑफ, इफ दे आस्क यू व्हिच फील्ड यू वर्क यू वुड प्रेफर पोस्ट आईएसपी, तो कहना मार्केटिंग सर, मार्केटिंग. तो सर मैं उसको कैसे If they say that you have mentioned operations and supply chain, you say sir at the, because I was working, अभी भी दिखाया हुआ है कि you are working continuing. currently So as my work was related to this field of operations and supply chain, तो है ही नहीं, operations है, operations of immigration setup. So I thought at that initial stage that okay, operations may be the field in which I may pursue. But now, while I was preparing in detail what all I need to know for operations to be doing good in this field, I have done introspection and I have done a course correction in my own approach, and I feel I am more fit for marketing. समझे? वो मार्केटिंग का सारी पीपीटीज, फिलिप कॉटलर की बुक, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, बेस्ट एड, वाई यू लाइक, वाई यू डिड नॉट लाइक, पुरानी पीपीटी मार्केटिंग वाली जो डाली हुई है, वो सब उनकी वीडियो एकदम गहराई में देख, कितना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, नज़र ही मारनी है, फिलिप कॉटलर की समरी देख लेना बुक की, जो फर्स्ट पेजेस होते हैं, ये आप फिर भी डिफेंड कर जाओगे, इसमें संभाल लोगे थोड़ा बहुत, उसको संभाल नहीं पाओगे ऑपरेशंस का इतना, आपका कंपटीशन भी आप बड़ा खतरनाक बढ़ा रहे हो ना, आपका कंपटीशन उसमें ले जा रहे हो जो आईआईटीज हैं या बीटेक हैं, एनआईटीज एंड वर्क एक्स ऑफ 3-4 years, तो वो दे आर द पीपल हु विल बी प्रेफर्ड फॉर दिस ऑपरेशन. तो यहाँ जैसे ही आप, ये मैं पूछ रहा हूँ सिक्स सिग्मा कानमानी, बहुत 0.01% वाले आंसर आ रहे हैं, तो इनको एज कर भी नहीं सकते जब तक हमने हाथ से काम नहीं किए हो. There is PPC, production planning and control. That is a part of operations and supply chain. Then there is statistical process control, SPC. आपको नहीं पता, ये सब इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी है, इंजीनियरिंग के बाद बच्चे करते हैं. Operations and supply chain is majorly meant for those background, not for legal students. Okay, so course correction. So I said, Sir, while I was filling the form, I had no consultation. I had not discussed with anyone, and I thought my work ex is in operation. अगर पूछेगा, so that's why I had initially thought. But now once I got mentorship from some of the top B schools, students who are seniors who were assigned to me like at IIM Shillong, नहीं बोल देना है. मैं लगाया IIM Shillong ने किसी सीनियर्स को आपके साथ, नहीं बोल देने का, वो कई बार करते होते हैं, कई कॉलेज करते हैं, जैसे IIM कोचिपुड़े के कॉलेज के बच्चे, दे गाइड द जूनियर्स. एसपी जैन में तो थे एक दो, हाँ एसपी जैन, हाँ तो उसको बोल देना, एसपी जैन में भी ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन पर है. हाँ उसका तो ये मेरी तो प्रॉब्लम है, शॉर्टलिस्ट ही ऑपरेशंस की आई चलो थी। वो भी एक प्रॉब्लम थी, तो कोई नहीं. तो यू टेल दैट while I interacted with people from top B schools while they were mentoring me, and while I studied more in detail that what all I will be studying in marketing, what all I will be studying in operations, I have now made a course correction that marketing is the best one. ठीक है, ओके, इस तरह से डिफाइन करना, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है. 50% चांस ये है कि वो पूछेंगे, ग्रिल करेंगे क्यों मार्केटिंग. बाकी कहना, आई फर्दर सर, आई विल बी स्टिल ओपन, आई विल डिसाइड एट द सेकंड ईयर व्हाट स्पेशलाइजेशन है. विच कंपनीज यू वुड लाइक टू वर्क? देखिए आईएसबी में कौन कौन आता है रिक्रूटमेंट करने, नहीं देखी है? नहीं मतलब मैंने देखी है, जैसे अभी ये तो अभी रीसेंट प्रोग्राम है तो इसमें अभी प्लेसमेंट्स का नहीं है, हाँ बट जनरली जो आते हैं. इंटर्नशिप्स के लिए जैसे अमेजोन आई है, मैकेंजी आई हाँ, है, और HUL। तो बोलना मैं किसी में भी जा सकती हूँ. ठीक है, टॉप लॉ एडवाइजिंग कंपनीज इंडिया की. बेचा जी जिस लाइन से आ रहे हैं हम उसका जीरो नहीं लेके जा सकते. खेतान एसोसिएट्स, KBZ एसोसिएट्स, तो इतना क्या सोचना था, खेतान तो सारी दुनिया को पता है. टॉप कंसल्टिंग कंपनीज इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मैकेंजी, और बेन, हाँ, और एक और है BCG, दिल्ली में। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, इनके सबके मॉडल्स सब पढ़ो, क्या क्या है, बिजनेस मॉडल्स कैसे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मॉडल, या BCG मैट्रिक्स पे भी पूछ सकता है, काफ़ी इनका फेवरेट एरिया है. मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स as mentioned in the constitution. So in Article 44, it deals with directive principles of state policy, and in other articles there are
in directive principles of state policy, the citizens also have been assigned some responsibilities that they have to take care of the environment. They have to uh, take care of the other people or the surroundings around them. ओके, मेजर राइट्स ऑफ सिटीजन, इतना अच्छा आंसर नहीं है वो, ये ग्लोबल ज्ञान को लिख रहा है, स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, इसमें मेजर राइट्स ऑफ सिटीजन वो भी जरा पढ़ लेना एक स्पेसिफिक। व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू फॉर आईएसबी प्रोग्राम एज यू आर ए लॉ स्टूडेंट, इसमें हमने बात कर ली पहले। व्हाट वी विल ब्रिंग टू द आईएसबी वो। हॉबीज, So reading books and cooking. तो लेटेस्ट बुक व्हाट यू हैव रेड, दे विल आस्क। So recently I read Looking for Alaska by John Green. ओके, So in this book, there's this girl who gets lost, and the guy who is her friend starts looking for her, and then he finds out about different things about her ओके। which he did not हाउ know. इज आशिमा एज ए पर्सन? So I'm someone who's adaptable इतना and टाइम नहीं open लगना to चाहिए, इतना challenges. टाइम नहीं लगाना, आने दो यार, बना रही है आंसर। Hmm. हाँ, चलो चलो, शाबाश। I'm someone who's adaptable and open to challenges, and this can be seen from my background and my transition from law to management field. How is your humor quotient? They give lot of importance if people trust you, Hmm. trustworthy, Okay. इसको mention कर देना। Hmm. Ashima sir, I am a person, as per feedback I receive, I am a trustworthy person. People can share their important and secret things also with me, and I try to give them my counseling advice and consolation to them. ये इसको trustworthy को बहुत importance देते हैं। How is your humor quotient, sense of humor? So I have seen that I can make people laugh, and also I'm someone who enjoys stand-up comedy and someone who enjoys Enjoy sitting with doing my or enjoy watching? watching stand-up comedy, Hmm. and also sitting with my friends and joking. आई लाइक टू जोक, वहीं से स्टार्ट करना। स्टैंड अप कॉमेडियन तो देखने से कुछ नहीं होता। तो आई एम ओके, नॉट वेरी ग्रेट, बैलेंस आंसर देना। नॉट वेरी, आई थिंक आई एम ओके ऑन इट, नॉट वेरी ग्रेट, नॉट वेरी पुअर। विद द पीपल आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम मोर, आई टेक मोर ऑफ joy, joyful, kidding, etc. Your views about future of AI and challenges it will bring? So, according to me, artificial intelligence in the short run could lead to loss of jobs. But if we tackle it in a right manner, and if the people are trained, uh, the skills needed to tackle with AI and to use it as a supplement, we can really grow as a society, and it can act as a supplement in a lot of fields. Supplement, enabler, enabler, ठीक है, ये वर्ड अच्छा है। So what challenges it brings? So one of the major challenges that AI brings is over dependence on AI can lead to loss of neural activity, as this can be seen in various studies. One such study is conducted by MIT, Very good, and very good, they showed that over reliance on AI tools like ChatGPT can lead to loss of critical thinking skills, very which good, are essential in every field. very good. What else? So another challenge that AI can lead to is loss of jobs in the short run. Okay. Over automation can lead to unemployment, which is which What is else? मेरी पुरानी इंटरव्यू सुनते नहीं हो, ये प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम। Environmentally it will have effect because lot of heat gets generated when the AI tries to a lot uh, of go water through and different patterns, run through different processors. There is a lot of heat which gets generated as compared to when a human brain does something. So that heat, for that heat, lot of water is getting wasted. That is one side. Secondly, electricity, huge electricity, excess electricity will be needed to run through them. तो ये सुना नहीं तो फिर फायदा नहीं। आपकी अब ये इंटरव्यू देखो, 80% प्रोबेबिलिटी इनमें कुछ ना कुछ आ सकता है। अब हम कोई भोला बच्चा नहीं सुनेगा तो फिर कहानी खराब ही है ना उसकी। Which Indian company has shared investment in AI cloud servers infrastructure development in India recently? so not aware. न्यूज़ नहीं सुननी, अदानी। फिर वही कहानी वीक की वीक, जहाँ हम थे
उससे 10% ही आगे बढ़े. Now coming to the feedback, introduction was decent. लीगल वो एडमिन कोऑर्डिनेटर, रियलिटी ये थी वहां से जॉब नहीं लगी. आर्मी लॉ कॉलेज से कोई जॉब की ऑप्शंस थी? मैंने प्लेसमेंट्स में बैठी नहीं क्यों थी. नहीं बैठे हुए? सर मेरा प्लान ही नहीं था. मतलब मेरा प्लान ये था कि एमबीए करना? पापा के बिजनेस का प्लान था मेरा. ओके. या फिर बोलो कि मेरा टुवर्ड्स द third or fourth year, I had figured out that though I liked law, but I don't want to pursue it as a career. So I wanted to be in the field, in the business world, business field. ठीक है. My father, he was running a business. I used to see him run. And कोविड इसी टाइम आया ना जब आप वहाँ थे? मतलब मेरे सेकेंड ईयर में. तो आप बोलो ड्यूरिंग सेकेंड ईयर स्टोरी अच्छी बनेगी. ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ कोविड, of my graduation, I gave almost 30%, 30 to 40% time to my father's business. Time. क्या है वो business? सर इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का. ओके. माय फादर्स बिजनेस रिलेटेड, यही वही तो कंपनी नहीं है ये? उसी का वर्क एथिक है. और बता दोगे अगर किसी इंटरव्यू में कोई पूछता है तो बता देते हो ये अपनी कंपनी? अगर कोई पूछे तो हाँ तो ठीक. So while I was in my second year of graduation, COVID stuck, and I tried to help my father in his business, which was related to immigration consultancy, etc. So during that, I figured out that I am good in creativity. Marketing से लिंक हो गया. I am good in designing creatives. Marketing से link. I am good in understanding people's situations, what aspirations they have, what concerns they have, and accordingly I used to tell my father to make creatives from our side or write-ups from our side which were going to address those concerns. So I'm good at understanding others' psychology, the psychology of the customers. Then I think I'm good in reaching out to people also, in spreading, in promotion. We made 20 broadcast lists during COVID time. We made our IG page, we made our FB page more active. We used to tag people, we used to boost posts, etc., etc. So that once, and online counseling slots we used to give in. We created Google Sheets, so we used to give online counseling slots to students and their parents to clear the things, etc., etc. So I during that period I realized that management is more of my. So I changed my interest from there to. Okay. तो इसमें इंट्रोडक्शन में भी ऐसे थोड़ा बोल सकता है. आई हैव डन BLOA, but while I was in the second year of my 5-year program, the COVID stuck and I was stuck to home. So I used to attend online classes, but parallelly for 30-40% of my time, I helped my father run his business, and from there the interest got generated. That's how I did not go for a job for post my graduation. So लॉ वाला तो क्लियर ही है कि उस टाइम इंटरेस्ट था. नॉट परसुइंग लॉ नाउ, ये स्टोरी बन गई. व्हाई यू नॉट परसुइंग लॉ? व्हाट ऑल यू विल स्टडी एट ISB, बताओ. 2 ईयर हमारा प्रोग्राम का क्या है, करिकुलम पता है? So in term one, I'll study subjects such as critical thinking and data. एक दो दूजे ते लड़खड़ा गए. 8 प्रोग्राम पूरे दिमाग में पक्के होने चाहिए. इसको 10 बार ही गो थ्रू द नेम्स. एटलीस्ट आपको 5 या 6 तो याद हो जाएंगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. योर सजेशंस अबाउट फॉर आवर प्रोग्राम, another way of trying to know how you have studied it, how you have seen it. Be prepared for such kind of questions. तो इसमें क्या आंसर दे देखा होगा अगर करिकुलम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, देन यू कैन थिंक, है ना. इसमें हम्बल और राइट आंसर ही होता है सर. At this juncture, I think I am where I am yet to come into the program. I think it will. Won't be able to make some very good suggestions about the program. ऐसा बोल सकते हो. और कोई अगर लग जाए कोई, उसको देखते हो. इंटर्नशिप तो दे ही रहे हैं, इंटर्नशिप दे रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये वो. इसमें फॉरेन एक्सचेंज का वो भी है, ये टीचर्स का आ ही रहे हैं. ना ही देना मुझे. यू आर वेरी लेस एक्सपीरियंस्ड, फ्रेशर टाइप, हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं. हम्बल आंसर दें तो अच्छा रहेगा. इफ दे आस्क यू
you your suggestions for our program. Sir, no, at this time where I am yet to come to the college campus and the program, I think it won't be fair for me to give any suggestions at this stage. But when I come in, once I interact, when I have experienced it, I'm sure I may be able to give some suggestions. Other calls you have, yeah, I'm Shillong, he mentioned. आई एम अमृतसर अमृतसर मत करना, आई एम शिलोंग इसके टक्कर। और कौन सा है? कोझिकोड भी है। हाँ, एक्सेल का हो गया होना है। नहीं, अभी होना है। हाँ, कदों है? मेरा है 12th को, 12th ऑफ मार्च। अब वो बच्ची गई है इंटरव्यू देने, वो फीडबैक देगी, रिया जो है, तो वो आपको हेल्प करेगा। इसी तरह आपकी वीडियो ने हेल्प करेगा। चलो कोई IFT है। हाँ, IFT बहुत बढ़िया है। IFT के लिए मैंने आज वैसे डाला है ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है। what are SPVs? तो ये टर्मिनोलॉजी बिजनेस से रिलेटेड लॉ की टर्मिनोलॉजी। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, इट इज ए टाइप ऑफ entity which is made in such a way that you get faster registrations in a country. Every country has SPVs, special purpose vehicles, under which you register yourself. You can get quick, registration. Long process of verification is not there. You can get easy loans. You can get easy, you can transfer funds from outside to complete the procurement of land, buildings, etc. All approvals, many things are faster in this. तो ये हम ये नहीं कह सकते लॉ वाले हैं, मैनेजमेंट में जाना है, अपन को पता नहीं है एसपीवी। तो ये MOA MU। अच्छा, अभी ये है लॉ लॉ टर्म्स यूज्ड इन मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, लॉ टर्म्स एंड लॉज यूज। गूगल पे सब मिल जाएगा, सर्च मारनी, वीडियोस मिल जाएंगी, उनसे जिस्ट निकालने। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, SCM एटसेट्रा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एटसेट्रा, यहाँ परचेजिंग, एडमिन, जनरल कंपनी सेक्रेटरी के रूल्स, कंपनीज को रजिस्टर करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। फिर उनका एनुअल, उनके मेजर गाइडलाइंस, कॉरपोरेट कॉरपोरेट गवर्नेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब नॉर्मली लॉ वाले, कई बार लॉ वाले बच्चे CS करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, तो वो एक अच्छा उनका लिंकेज बनता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही बेसिकली कंपनी सेक्रेटरीज देखते हैं कि कंपनी सब लीगल एस्पेक्ट फॉलो कर रही है नहीं, MOA ठीक है कि नहीं। फिर एनुअल रिपोर्ट, ये पब्लिश हुई नहीं हुई। शेयर होल्डर मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग एक बोलते हैं, जनरल एनुअल जनरल मीटिंग AGM। कंपनीज के लिए रेगुलेशंस हैं कि इस टाइप की कंपनीज हैं, इस टाइप की टर्नओवर की, पब्लिक लिमिटेड के लिए या ये जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए AGM कितनी होनी चाहिए इन ईयर, AGM का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को बुलाया जाना चाहिए, ओपन जनरल बॉडी मीटिंग GBM, जनरल बॉडी मीटिंग GBM। तो ये सब उसमें स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो जितना ज़्यादा तैयारी करके जाओगे उतने सॉलिड रहोगे। ये लीगल का ज्ञान ही है सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रॉल्स। तो क्या नहीं है, क्या मुझे पता है, कुछ तो पढ़ा हुआ है, ये सारा भूल गए हो आप। कॉलेज में आता है ये सब, टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ एंटिटीज, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट यू विल ब्रिंग टू ISB, ये बोलेगा। तो अगर सिलेक्शन होगी ना तो सारा 80% क्रेडिट विल गो टू मी। समझ गए जो हालत है अपनी आज दे दें, समझे? तो करना है और बताना है मुझे। नहीं, मैंने पढ़ना पूरा जोर लगा दिया, माइंड का, सोल का सारा, कि कर ले अपनी आशमा इसको क्लियर। एक बच्ची का हुआ ही था, उसका सिमरन। चलो भगवान करे बहुत अच्छा हो, ठीक है। चलो, और एक्सेल ड्राइव में भी यही चलती है कहानी। IM शिलोंग में भी ये सब हेल्प करेगा जो हम करेंगे। लीगल और बिजनेस वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू बी इन बिटवीन देम एट दिस पॉइंट, यू आर इन बिटवीन देम। तो लीगल वीक ना दिखे, पहली बात उसकी ज्ञान हो, और लीगल में यहाँ कैसे यूज करूंगी या करवाऊंगी, और कैसे उसका मैं क्लास को फायदा दूंगी एटसेट्रा, वो चीजें करके चलनी। और मार्केटिंग विल बी गुड फॉर यू होपफुली, ठीक है। मार्केटिंग का और पढ़ लेनी सारी बुक्स जो मैंने की। अब अगर थोड़ा थोड़ा पढ़े, थोड़ी थोड़ी सिलेक्शन होगी, बहुत टफ है कॉम्पिटिशन। मेरे हिसाब से इंडिया का नंबर 1 भी स्कूल है जिसके लिए आपके इंटरव्यू है। और परसेंटाइल कितनी है? 95 समथिंग है। 90 है। अच्छा, वो उधर अपना GMAT के थ्रू है।
हाँ, तो ये जीमेट का चौका यही लगना है, तो लगाओ इसको चौके को, भगवान करे इससे हो जाए जीमेट के थ्रू। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉल यू हैव। आई एम अहमदाबाद से ऊपर जाने का चांस है। 6 घंटे सिर्फ सो और ये सब करके जाओ, ऐसे तैयारी से जाओ, अपने इतने कॉन्फिडेंस से, और आपके साथ चलेगी, मैं बड़ी तैयारी वाली कुड़ी आई हूँ, मैं डरती नहीं किसी को, और कन्विंस कर लेना कि मुझे चाहिए, अब मुझे ले लो, मैं आपके लिए बढ़िया करूँगी। समझिए, ये करो के जाओगे तो हो जाएगा। आई शिलोंग हो, वो भी पर्सनल होएगी दिल्ली में, वो भी बल्ले बल्ले होएगी, ये भी बल्ले बल्ले होएगी, और कौन सी रहती है ये एक्सेलराई, वो भी बल्ले बल्ले होएगी। यही स्टोरी चलनी है सब जगह। पर मार्केटिंग का सारा ज्ञान पता हो, क्योंकि उन्होंने 20% रेडी बच्चा लेना है। जो हमने किए हुए हैं मार्केटिंग में सारे एसटीपी, ये 7 P's ऑफ मार्केटिंग, बेस्ट एड, वो सारे डिस्कशन में है पास्ट इंटरव्यू में, उनको सुनो, बुक पढ़ लो फिलिप कॉटलर, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक्सेलराई तक टाइम है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की टाटा मैकग्रा-हिल की बुक लेके सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ के एक बुक बना लो रजिस्टर, क्या क्या कैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैंने किए हुए हैं कवर इंटरव्यू। 30-30 मिनट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कवर, 30 मिनट में एआई कवर किया हुआ, जो आज के दिन में हाईली रेलेवेंट। फिर जो उन्होंने पढ़ना नहीं, फिर कितना होएगा, थोड़ा करांगे फिर थोड़ा ही रह जाएगा। अब थोड़े वाले कॉलेज नहीं है, तीनों वो बड़े बड़े हैं, अमृतसर अमृतसर कहीं बड़े हैं, अमृतसर हो जाएगा पक्का, नो प्रॉब्लम। तो ये उस पे एसपी जैन से ऊपर है ये तीनों, अब उससे ऊपर वाले को करें, पीछे को भूल जाओ। ओके, आईएमटी गाजियाबाद भी अभी होना है, हो गया, वो ठीक हुआ था। हाँ, चलो वो भी फिंगर्स क्रॉस है। 90 पे आमतौर पे आईएमटी गाजियाबाद, नहीं वो भी मेरा जीमार्ट के थ्रू अच्छा, वेरी गुड, लेट्स होप अपने को नॉर्मल मिल जाए, नहीं तो वो डीसीपी देते हैं, ड्यूल कंट्री प्रोग्राम, डीसीपी। तो लेट्स होप हो जाए, अच्छा हुआ है तो वेरी गुड है, गॉड ब्लेस। सो इनको तीनों को पूरी शिद्दत से लग जाओ, 6 घंटे सिर्फ सो, ऐसे करके जो वीडियोस हैं वो देखो, मार्केटिंग पीपीटी देखो, बुक ले लो फिलिप कॉटलर, ऑनलाइन मिलती है ऑनलाइन ले लो, टाटा मैकग्रा हिल की मार्केटिंग मैनेजमेंट वो बुक लेके रगड़ दो, और फिर उनमें नेट पे वीडियोस देखो, मार्केट लॉ एंड मार्केटिंग, लॉ लॉ टर्म्स इन मार्केटिंग, लॉ टर्म्स इन फाइनेंस, लॉ टर्म्स इन अकाउंट्स, सारे होते हैं अकाउंटिंग लॉज है वो। फिर ये टैक्सेशन के लॉज, फलाना ढिमका, बिजनेस लॉ यूज्ड इन परचेजिंग, लॉ टर्म्स यूज्ड इन परचेजिंग, लॉ टर्म्स इन एचआर, जैसे मैंने बोली, एकदम रेडी करके रजिस्टर बना के 30 पेज तक बना के जाना, कितना नहीं होगा। और ये आप वहाँ ज्ञान दोगे बच्चों को बाद में। कंपनी सेक्रेटरी, फिर टाइप्स ऑफ कंपनी, ये वो पूछेगा, हो सकता है वो कंपनी सेक्रेटरी को बैठी हुई है, नहीं भी होगी ऐसे पूछेगी, क्योंकि पता सबको होता है मोटा मोटा, जैसे मुझे पता है, मैं कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं हूँ, बट आई यूज टू सिट इन मीटिंग वेयर कंपनी सेक्रेटरी यूज टू शेयर विद मैनेजमेंट की ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हमारे ये इश्यूज है ऑर्गेनाइजेशन के, ये हमारे कंसर्न्स हैं एज ए सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ये हमें कंप्लाई करना है, ऐसे करना, ये रिप्लाई लेना, ये करना, तो इसलिए आई एम नो दिस, ठीक है। चलो गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, खुश रहो, भगवान करे अच्छा, और मेरे को अगली फीडबैक बतानी है। यस सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर, खुश रहो।